The topic that we will be discussing today, I have made the presentation in full screen, and I hope you can see it in full screen, all of you. Okay, I hope it is visible in full screen. Just tell me if it is visible in full screen. This is a very, very good presentation, and the topic that we are going to discuss, it is very well discussed in this one, and बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें जो है वो complete हुई है. ठीक है. So those people that are not in the class, you call them in the class because the topics that we will be studying, they are going to be a part of your stand-up exam. Okay, mineral absorption in roots. How minerals, solutions, our soil water is present in the form of solution. लिखिए हर बात को बोर्ड के ऊपर मैं जाऊंगी ये presentation पूरी करके. Mineral absorption by roots. Minerals are required by plants. ठीक है, and these minerals that are required by plants are absorbed by the roots as they are dissolved in water. The minerals, the microelements, the macroelements, the trace elements, all those elements that we have already studied in chapter 2 and we have already studied in the beginning of chapter 10, they are all available to the plant through the soil water. They are available to the plant through the soil water and they are dissolved in the water. The source of minerals for the plants is just the soil water which they will absorb from the soil. The plants synthesize all their required nutrients by absorbing minerals from the soil. Very important point. Plants require various nutrients for their body functions. इनकी body functions के लिए बहुत सारे nutrients की जरूरत होती है plants में. ठीक है, तो plants क्या करते हैं, उनके लिए जो भी minerals, because they are not eating food, they have to produce everything. और वो जो कुछ भी उन्होंने produce करना है, उन्होंने उसको क्या करना है, उन्होंने उसको absorb करना है, and they have to prepare them by special types of processes that are being carried out inside their body. Very important point. Plants synthesize all their required nutrients by absorbing minerals from the soil. Roots provide extensive surface area for maximum absorption. Roots provide extensive surface area for maximum absorption. Matlab, roots are very thin and they are very widely distributed and they are useful for fixing the plant in the soil and for absorption of water. Okay, next slide. Have you seen? Can you see the next slide? I am changing the slide. In case the slide जो है वो stuck है, तो मुझे आप बताइए. Process involved in the absorption of roots. Various processes are involved. Various types of diffusion processes are involved, and those processes that are involved, they are by active transport or by passive transport. They are by active transport or by passive transport. Okay? Active transport क्या है? Active transport is that transport in which the energy is used to change materials from one part to another. Okay? And passive transport is the simple diffusion. Can you see the slide now? Passive transport is that diffusion in which I have changed the slide now. Can you see the slide beta? तो ये बहुत मसला है. Can you see the slide? मैंने दोबारा से शेयर की है बेटा. Okay. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में डाइफ्यूजन है लेकिन डाइफ्यूजन के अंदर एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व. ठीक है, फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन इज दैट टाइप ऑफ डाइफ्यूजन इन व्हिच सम मटेरियल्स, some proteins, some carriers are involved to transport the material from one place to another. Whereas क्या है, these are all different types of diffusion and in different types of diffusion. बेटा अपना यहाँ मैंने आपको बताया है ना कि because of the sound disturbance, that is why my voice will be lagging somewhere. So kindly bear with me because we are not at home. We are taking the classes from college and we have sound disturbance off and on. So that is why kindly bear with me.
So if my voice is lagging in some areas, I will repeat the points over and over again. ठीक है बेटा? Usman Danish? Facilitated diffusion is that diffusion in which the diffusion is facilitated, it is helped. Now, active transport energy is going to be used. Passive transport in which no energy is going to be used. It is a very smooth type of diffusion process. Facilitated diffusion is that diffusion in which help is required. Now, active transport. Water is absorbed due to activities going on in the roots. Absorption of water occurs with the help of energy when ATP is used. When absorption of water requires energy, it occurs at that time when absorption takes place against the concentration gradient. We know that absorption of water and movement of water, it is taking place from the region of higher concentration to the region of lower concentration. ठीक है, तो absorption takes place against the concentration of gradient जहां पर आ जाता है वहां पर फिर आपको active transport की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो when against the concentration gradient absorption है तो फिर energy होती है कि आपको कम से ज्यादा की तरफ आपको push करना है molecules को. Passive transport is the normal type of absorption and it is that absorption that takes place along the concentration gradient when the concentration of the cell sap is higher than that of the soil water. Normal situation may from a higher region to a lower region. It does not require any type of energy. Now, what is osmosis? Osmosis is diffusion of water across a semi-permeable membrane. When a semi-permeable membrane comes and water passes through that membrane, it is known as osmosis. When the water is passing through the cell wall, it is known as diffusion. Because diffusion में cell wall is not a selective membrane. Cell membrane is a selective membrane. तो वहां पर उस diffusion को हम बोलेंगे osmosis. It does not require any cellular energy. Hence, it is also a passive type of transport. Osmosis, when it goes inside a cell, it is called endosmosis. Osmosis, when water moves out of the cell, that is called exosmosis. Into the cell, endosmosis. Out of the cell, exosmosis. Now, this is water molecule. ये red जो है, ये water molecule है. This is a higher gradient of water molecule. ठीक है, higher gradient of water molecule आप देखें अंदर कम है, इधर ज्यादा है. Osmosis across the permeable membrane through the gates. Selection is going to take place and then water is going to be allowed in. This is simple diffusion osmosis. Passive diffusion, ये देखें cell wall से बगैर किसी selection के water is going to enter inside. Then active transport क्या होता है? You have high concentration of salt outside. Then the salt is going to be forced out of the cell. This is the case where active transport is going to take place. Sugar molecule को जबरदस्ती हम बाहर निकाल रहे हैं. जैसे कि हमने ऑलरेडी उसमें पढ़ लिया है अपना जो हमने ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स में पढ़ा था. From the companion cell, sugar molecules have to be pushed out. ठीक है, उसमें active transport was required. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. I have changed the slide. Transport in tons. Role of roots in transport of minerals and water. Most of the water absorbed by plants comes through the root hairs. Root hair की वजह से water की absorption होती है. Root hairs वाली slide लगाई है मैंने. ठीक है, root hairs की वजह से water की absorption हो रही है. Roots are the main structures that are used to anchor the plant in the soil and to absorb the materials. ठीक है, next slide. ये देखिए, this is the root and these thin structures, can you see the thin structures? These thin structures, they are the root hairs. Their function is anchoring the plant in the soil and to increase the amount of water by increasing the surface area to which it is exposed. Surface area exposed means कि जितना ज़्यादा उसको फैलाएंगे उतना ज़्यादा absorption होगा. The root hairs collectively provide an enormous surface area. Can you see the slide? Almost the root hairs are always turgid. This is a very important point. आपकी books में नहीं लिखा हुआ because their water potential is greater than that of the soil. Water potential भी आज हमने क्या
ठीक है, almost always turgid because their water potential is greater than the water potential of the soil. Water potential का क्या मतलब है? The amount of energy that is present in water molecules. ये मैं अभी करवाती हूँ, इसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा बेटा. Okay, next. I have changed 2 slides. Can you see the slide? Role of roots in the transport of minerals and water. वाली slide मैंने लगाई है. Once in the roots, the ions are transported via the xylem throughout the plant. Once water is absorbed into the roots, then the transport of water is the duty of the xylem. The surface area of water and mineral absorption is further increased by a symbiotic association, which is known as mycorrhizal fungi. ठीक है, mycorrhizal association is an association of the roots with special type of fungi, and these fungi, they increase the surface area. ठीक है, and they are very very helpful in phosphorus uptake of the roots. Water uptake takes place by 3 जो है वो transport routes. 3 transport routes क्या है? एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, वेक्यूलर पाथवे. ये मैंने समझाया भी है, दोबारा भी देख लीजिए. एपोप्लास्ट पाथवे, मूवमेंट थ्रू द सेल वॉल्स इन स्पेस बिटवीन द सेल्स. डेफिनेशंस लिखी हुई है, नोट कर लीजिए. एपोप्लास्ट पाथवे, मूवमेंट थ्रू द वाटर through the cell walls and the space between the cells. Simplast pathway, cytoplasm continuum between cells connected by, matlab it is through the cytoplasm and plasmodesmata are going to be involved. Vacuolar pathway, transport between the vacuole to vacuole from neighboring cells. These are the 3 main pathways by which water is going to be absorbed through the root. Okay, water is going to be absorbed through the root. Okay, right, next चलते हैं बेटा. Okay, can you see the slide? I hope you can see this. This is a very good slide. इस slide का screenshot ले लीजिए. ये पूरा sketch है और इस sketch में जो है आपको सारा कुछ जो है वो नजर आ रहा है. ठीक है बेटा, इसमें देखिए. Now apoplast pathway black, ये black में है. This is along the cell wall. ये बहुत अच्छा स्केच है बेटा, इस स्केच को आप लोग अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, दैट इज द सिम्प्लास्ट पाथवे. फिर आपके पास वेक्यूलर पाथवे. वेक्यूलर पाथवे इज फ्रॉम द वेक्यूल टू द वेक्यूल. इसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन रूट भी कहते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसमेम्ब्रेन रूट. फ्रॉम मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन ये शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, मेम्ब्रेन इसमें प्लाज्मोडेस्माटा, बाय एंड लार्ज प्लाज्मोडेस्माटा इज नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड. राइट, नेक्स्ट स्लाइड. नाउ ये देखें, ये एक और तरीके से है. एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट है, बहुत अच्छी स्लाइड है. ऑरेंज जो है ये हमें बता रहा है कि हमारी सेल के कौन से वाले एरियाज हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इस लिहाज से कि आपको पता चलेगा कि पानी कहाँ तक पहुंच रहा है. नाउ दिस इज द ब्लू इज शोइंग द एपोप्लास्ट पाथवे. दिस इज द एपोप्लास्ट पाथवे, द ब्लू वन. दिस इज द एपोप्लास्ट पाथवे. ठीक है, ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका एपोप्लास्ट पाथवे है. और फिर क्या है आपके पास? नेक्स्ट आपके पास है ये जो ब्राउन सा है, लाइट ब्राउन सा, लाइट स्किन सा. दिस इज अ सिम्प्लास्ट पाथवे. नाउ एपिडर्मल सेल्स में एपोप्लास्ट पाथवे गोइंग smoothly and then this is the Casparian strip. As I told you people, Casparian strips are going to hinder the movement of water through the cells. ठीक है, it is going to hinder the movement of water through the cells. So the water is either going to change the pathway or it will have to cross the Casparian strip by the use of energy. ठीक है, and this is mainly a hindrance in the apoplast pathway. Then this one is a simplast pathway, which is a connection through the plasmodesmata and simply अंदर तक चला जाता है and then into the xylem vessel. And then vacuolar pathway को यहाँ पर इन्होंने शो नहीं किया हुआ. Apoplast pathway, when the Casparian strips appear, वो क्या है? They either change the pathway, they shift into the next pathway,
or they use ATP to cross the Casparian strip and enter the pericycle and endodermis. ठीक है, Casparian strips are the first layers of the endodermis and these are very hard and solidified cells. ठीक है, ओके, एक और आपके पास स्केच है, जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू एपिडर्मिस, एक्सचेंज की साइड मैंने कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड देन टू द जाइलम. ये इसका पाथवे है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम. ये इसका पूरा रूट है. आपको स्लाइड पीछे करके बताती हूँ. ये देखिए, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, पेरिसाइकिल, जाइलम. ये रूट है, ये स्केच में है. नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, in the endodermis, the passage of water through the cell wall, apoplast pathway, very important point, is blocked by the Casparian strips. Water molecules must pass through the cell membranes and protoplasts of the endodermal cells to reach the xylem, because the Casparian strip is not going to allow the movement across the cell wall. Energy requirement होगी यहाँ पर, ठीक है, ATP यूज होगा या फिर पाथवे चेंज होगा. नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए रूट हेयर. ये डायग्राम पेपर में बनाएंगे, बहुत अच्छी डायग्राम है. ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टिकल रीजन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, कैन यू सी द स्केच? प्लाज्मोडेस्माटा है, फिर जाइलम है. एंडोडर्मिस लेयर पहले है, पेरिसाइकिल लेयर सेकंड है. ठीक है, वेस्कुलर सिलेंडर, जहां पर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, that is called the vascular cylinder or it is called the stele. This is a very important word, stele. Stele क्या होता है? एंडोडर्मिस में जहां पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जहां पर वेस्कुलर सिलेंडर होता है, जहां पर आपके पास जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम ये प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट पार्ट एपिडर्मिस, where we have the epidermal cell. Extension of the epidermal cell is called the root hair. Sometimes we have a mycorrhizal association with the root hair. ठीक है, when we have the mycorrhizal association with the root hair, then absorption जो है वो क्या होती है? Absorption बहुत सारी हो जाती है. ठीक है, absorption यहाँ पर क्या होगा? Absorption बहुत ज्यादा हो जाएगा. फिर cortical है, cortical cells are mainly parenchyma cells. ये स्केच आप लोग याद रखेंगे. Cortex cells are either connected with each other directly or they are connected by a plasmodesmata. ठीक है, और फिर उसके बाद ये देखिए एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं उसमें you have the Casparian strips which are stopping the passage of water via the apoplast pathway. And inside आपके पास xylem vessel है. एंडोडर्मिस का वो एरिया जहां पर आपके पास वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, that is known as the stele or the vascular cylinder. Next, ये देखिए नंबर 1, ये नंबर 1 बहुत अच्छी स्लाइड है, रेड कलर की स्लाइड देखिए. ये अपटेक ऑफ सॉइल वाटर बाय द हाइड्रोफिलिक वॉल्स ऑफ द रूट हेयर्स. हाइड्रोफिलिक वॉल्स का मतलब वाटर लविंग, provides access to the apoplast. Water and minerals can soak into the cortex through this matrix of walls. मतलब वाटर अंदर सॉल में भी आ सकता है, साइटोप्लाज्म में भी आ सकता है और सेल वॉल के जरिए भी पास ऑन हो सकता है. देन नंबर 2, ये ब्लू लाइन को देखें, ये नंबर 2 है. ठीक है, minerals and water that cross the plasma membranes of the root hair enter the symplast pathway. ठीक है, अब नंबर 3 किधर है? नंबर 3 मुझे नहीं नजर आ रहा. आप देखिए, आपको कहीं नजर आ रहा है नंबर 3? नंबर 5 नजर आ रहा है. ओके, नंबर 3 as a solution moves along the apoplast pathway. ये है. ठीक है, some water and minerals are transported into the protoplast. This is number 3. ठीक है, some minerals are transported into the protoplast of the cell and then they move via the symplast. Shift हो जाता है pathway apoplast से. Number 4, within the transverse and radial walls of the endodermal cells we have the Casparian strip. ये कहानी, ये बात है. ठीक है, ये नंबर 4 है. This is the Casparian strip. Casparian strips जो है इस बेल्ट, what is it? A belt of waxy material, पर्पल कलर की बेल्ट है, waxy material है, that blocks water and dissolved minerals. Only minerals already in the symplast or entering the pathway by crossing the plasma membrane will pass the Casparian strip.
otherwise through the apoplast minerals will not pass. ये बहुत अच्छी स्लाइड है बेटा, ये आप लोगों को लाजमी ये सारी स्लाइड याद करनी विद द स्केचेस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए कितने अच्छे से आपको स्केचेस बना के दिए हुए हैं यहाँ पर। एंडोडर्मल cells are also called the parenchymal cells within the vascular cylinder, discharge water and minerals into their walls, that is the apoplast pathway. इन द एंडोडर्मिस आपके पास जो है उसी तरीके से चीजें जो हैं वो आगे शिफ्ट हो रहे हैं। Xylem vessels transport water and minerals upward in the shoot system by the transpiration system, by the transpiration pull. Have you taken the screenshot of this slide बेटा? Yes, no बताइए ताकि फिर मैं स्लाइड चेंज करूं। आपने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लिया है जिसमें पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं और स्केच भी है? जी बेटा, yes, no, any answers? जी बेटा, ओके गुड, ये आपने लाजमी याद करनी है, ये बहुत अच्छी स्लाइड है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग द वाटर पोटेंशियल नाउ, or if there is any question in this topic you can ask me in the message box, then if you don't have questions then we will discuss the next topic.